welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किसे अपने घर रखना चाहती थी प्रियंका चोपड़ा? क्यों मलाइका अरोरा ने कहा कि वो हर किसी को प्लीज नहीं कर सकती? किस B-Town सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? Like as a new parent right now, I keep thinking about. प्रियंका चोपड़ा रखना चाहती थी एक abandoned newborn girl child को. प्रियंका चोपड़ा अपने घर में देना चाहती थी abandoned girl child को जगह. अपने चाइल्डहुड में प्रियंका चोपड़ा abandoned girl child को बनाना चाहती थी फैमिली मेंबर. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जनवरी में अपनी बेबी गर्ल को वाया सरोगेसी वेलकम किया, लेकिन अभी तक प्रियंका चोपड़ा ने अपनी डॉटर की पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है. ऐसे में पीसी ने बताया कि कैसे बचपन में वो एक बार अबैंडन्ड न्यूबॉर्न गर्ल को अपने घर रखना चाहती थी. रिवीलिंग द इंसिडेंट इन हर मेमोir Unfinished, Priyanka Chopra wrote, "My grandmother had come to live with us when my baby brother Sid was born. One night she was speaking to my mother in a low voice. When I opened my eyes in my sleep, I got up to see what was happening." Priyanka Chopra further wrote, "When I went to the kitchen, I saw my mother carrying a newborn child. Asking about the baby, my mother told me that when she returned to the car parked on the road outside the hospital after delivery, she heard a baby crying. It was raining heavily at that time and someone had left their newborn baby under her car. She was shocked to see the girl. That night, I wanted to keep the girl with me. It was no small thing. Gently, my mother explained to me that we cannot do this. Then my mother decided to give that child to a childless couple. When the couple was handing over the child, I carried her in my lap." Priyanka Chopra ने आगे लिखा, "I was unaware of this because I wanted to hold the baby in my arms. I can never forget the expressions on the faces of those who had come to adopt her. The woman had become so emotional that she had even fallen at my mother's feet." आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने हमेशा वुमेन और चाइल्ड राइट्स के लिए आवाज उठाई है. वैसे रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फ्रेंड एंटरप्रेन्योर पिंकी रेड्डी के लिए अपने घर पर डिनर भी होस्ट किया. Pinky Reddy shared a picture on her Instagram with Priyanka Chopra, Nick Jonas and captioned it, "It was lovely to meet at Priyanka Chopra at Nick Jonas in their beautiful home in Los Angeles for dinner. #friends forever. #great host." Well, ऐसे में प्रियंका चोपड़ा के फैंस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की डॉटर को देखने के लिए बेताब हैं. रैंप पर मलाइका अरोरा का दिखा देसी अवतार. मलाइका अरोरा ने कहा, "I am not an avocado that I can please everyone." मलाइका अरोरा ने अपने फैंस के लिए शेयर की एक हॉट एंड सेक्सी मिरर सेल्फी. हॉट एंड सेक्सी मलाइका अरोरा रिसेंटली पुणे में चल रहे एक फैशन शो के रैंप पर नजर आई. रैंप पर रैविशिंग मलाइका अरोरा अपने एथनिक लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. फैशन शो में मलाइका अरोरा का ये अंदाज देख जब उनसे पूछा गया कि हाउ हर स्टाइल स्टेटमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी इज सीन स्पॉटिंग ऑन रनवेज, तो उन्होंने कहा, "I am mostly in jeans or athleisure because that's the kind of person I am. But whenever I'm walking the ramp, I end up getting dressed in ethnic wear like adorned lehengas and saris." वैसे मलाइका अरोरा ने इस चिट चैट के दौरान अपने पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइलिंग को लेकर एक और बात एकदम क्लियर कर दी, और वो ये कि वो हर किसी को प्लीज नहीं कर सकती हैं. इन मलाइका अरोरा's words, "I am not an avocado that I can please everyone." ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि बोल्ड मलाइका अरोरा को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत भी नहीं है. आफ्टर ऑल वो हर ड्रेस को परफेक्टली कैरी जो करती हैं. हालांकि वही मलाइका अरोरा का ये भी मानना है कि यंग एज में अपने स्टाइल के साथ किया गया उनका हर एक्सपेरिमेंट हिट नहीं होता था.
people have become more aware of their sense of style. When I was young, there weren't many people to groom us on how to dress up. I experimented a lot with my looks, and some of those were terrible. But now I know what all works. यहाँ मलाइका अरोरा ने अपनी मोस्ट फैशनेबल फ्रेंड करीना कपूर खान को भी उनके एफर्टलेस स्टाइल के लिए प्रेज किया. Bebo is effortless and carries herself so well. I think that is what counts. वैसे मलाइका अरोरा भी खुद को बेहद एफर्टलेसली कैरी करती हैं. देखिए मलाइका अरोरा की ये लेटेस्ट मिरर सेल्फी, जिसमें बैकलेस ड्रेस में वो कितनी सेक्सी लग रही हैं. मलाइका अरोरा ने अपनी ये पिक्चर अपनी इंस्टा स्टोरीज में पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा आई एम बैक. बता दें कुछ दिनों पहले मलाइका अरोरा एक कार एक्सीडेंट में इंजर हो गई थी. दो उनको गहरी चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर 15 मिलियन की उनकी इंस्टा फैमिली भी इस खबर से बेहद परेशान थी. और अब मलाइका अरोरा को इतने हॉट अंदाज में वापसी करते देखना उनके फैंस के लिए किसी डबल सेलिब्रेशन से कम नहीं है. जानवी कपूर अपने फैशन चॉइसेस से कभी अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करती. ऐसे में उन्होंने अपनी कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस में दिख रही हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इन द फोटोज, द एक्ट्रेस slipped into a strappy black dress and clicked some stunning sun-kissed pictures of herself in front of a mirror. She chose to accessorize the look with a pair of dainty gold hoop earrings and kept her look classy with a messy bun. Well, इन फोटोज में जानवी कपूर अपनी flawless skin flaunt कर रही हैं by wearing minimal makeup. रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी को भले ही कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन दोनों के वेडिंग वीडियोस अब भी वायरल हो रहे हैं. देखिए वरमाला सेरेमनी से आए इस लेटेस्ट वीडियो को, जिसमें वरमाला डालने के बाद रणबीर कपूर ये कहते हैं कि से हाई टू माई वाइफ. आलिया भट्ट को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस किया एंड ही लेफ्ट आलिया भट्ट ब्लशिंग एंड शी टू सेड हाई टू एवरीवन प्रेजेंट इन द रूम. रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी के बाद मॉमी नीतू कपूर इज बैक ऑन सेट्स. रिसेंटली नीतू कपूर को उनके रियलिटी शो की शूट के वक्त पैप्स ने क्लिक किया, जहां वो बेहद अच्छे मूड में दिख रही थी. यहां जब उनसे पूछा गया कि उनकी बहू कैसी है, तो देखिए हाउ शी रिएक्टेड. आलिया भट्ट गैल गैडट के साथ अपनी हॉलीवुड डेब्यू से अब बस कुछ ही दिन दूर हैं, लेकिन अभी से उन्होंने ग्लोबल चार्ट्स पर अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है. According to the latest numbers by influencer marketing hub, Alia Bhatt is currently on the 6th spot of top global celebrity influencers. इस लिस्ट में आलिया भट्ट ने जेनिफर लोपेज, क्रिस हेम्सवर्थ और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे एक्टर्स को बीट किया है. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं, जिन्हें लिस्ट में 13, 14, 18 और 19 स्पॉट मिला है. कल मैं कहानी सुनाने वाला हूँ. आमिर खान का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पियानो प्ले करते दिख रहे हैं. अपने इस वीडियो के जरिए आमिर खान अपने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए ये कहते नजर आए कि वो कल अपनी कहानी शेयर करेंगे. इस वीडियो के साथ आमिर खान ने कैप्शन दिया, लेस देन 24 आवर्स टू गो टू नो, हैशटैग क्या है कहानी. ऐसे में आमिर खान की कहानी को लेकर फैंस के बीच मिस्ट्री और भी गहरी हो गई है और सभी बेसब्री से 28 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं. हीरोपंती 2 के लीड एक्टर्स टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया पहुंचे माहिम दरगाह इन मुंबई टू प्रे अहेड ऑफ देयर फिल्म्स रिलीज. टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया ने ऑफर किए फ्लावर्स एट द दरगाह. हीरोपंती 2 रिलीज होगी अप्रैल 29 को, जो की क्लैश होगी अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह स्टारर रनवे 34 से. श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया, जिसके वीडियोस और फोटोज श्रद्धा कपूर की आंट और वेटरन एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की हैं. इसमें एक वीडियो में श्रद्धा कपूर मुंबई के एक पॉपुलर जॉइंट में बोलिंग का गेम एंजॉय करती साफ देखी जा सकती हैं. श्रद्धा कपूर के साथ पिक्चर्स में उनके भाई और कजिन्स भी नजर आ रहे हैं. रिसेंटली कुणाल खेमू ने एक हिलेरियस वीडियो सबके साथ शेयर किया है, जिसमें वो चेयर पर बैठे अपनी वाइफ सोहाली खान को एज अ विलन इमेजिन कर रहे हैं who beats him up. Sharing the video on Instagram, Kunal Khemu wrote, "Badla, revenge. It's been quite a jobless Wednesday morning." सोशल मीडिया पर क्वाइट एक्टिव रहने वाली दिया मिर्जा अक्सर उनके बेबी बॉय अव्यान के ग्लिम्सेस शेयर करती हैं. ऐसे में रिसेंटली पोस्टेड एक लेटेस्ट वीडियो में अव्यान इज सीन गिगलिंग एज ही प्लेज विद अ प्लांट. इस वीडियो के साथ दिया मिर्जा ने लिखा, माई सनशाइन, हैशटैग सनसेट के दीवाने, हैशटैग सेंसरी प्ले, हैशटैग आई एम नेचर, हैशटैग वेडनेसडे वंडर. Coming up on the show, Guilty Minds की कास्ट श्रेया पिलगांवकर, वरुण मेहता और डायरेक्टर शेफाली ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट.
welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me the cast and director of the upcoming show Guilty Minds. Please join me in welcoming Shriya Pilgaonkar, Varun Mitra and Shefali Bhushan. Hello, hello, hello. How are we doing? Very good. Thank you. So it seems like you are guilty of having a very intriguing and gripping trailer, I must say. Haha, funny, TJ, thanks. Okay, diving right in. Shriya, you previously said that your character Kashyap in Guilty Minds is very strong-headed, has opinions, and that itself was very difficult to play as Shriya. Stubborn Can you also. please, please elaborate on this? Like, what do you mean? I think what I meant is that for Kashyap, she is somebody who has very strong ideals. Her understanding of life is in terms of this is right and this is wrong. And I personally feel like life is grey, just the way his character thinks. Which is why as Kashyap, I had to get into that mindset and be stubborn about the ideas of what I would think are wrong. You know, I guess her moral compass is different. And for somebody like that, life can be a challenge because you don't have too many people who think like that. Definitely. So there's a beautiful, gentle innocence to Kashyap. You know, she's very passionate. And she's somebody who, while she wants to do right, she won't do anything that that is even remotely, I mean, to get to that right, she will still not do anything remotely out of the way that she would deem as inappropriate. Sure. So I will say that she's not a jugadu like that. You know how there are many kinds of good people. You know what I'm saying? There are many kinds of good people, moral people, but Kashyap to me is the epitome of a gentle, powerful, idealistic soul. Okay, we're going to quickly play one quick game. It's called the Guilty Game. Okay. Don't be stressed. It's a little stressful, but don't be stressed. I will just say a few statements. You tell me if you're guilty of doing that thing or not. Guilty of cheating on a diet plan or health regimen? 100%. Of course. Please, of course. Which is the last diet that you all went on, or She what? had a brownie this For morning. breakfast this morning. Brownie for breakfast. Not even kidding. Guilty of getting your way out of a ticket or a fine? No. I play by the rules there. Kashyap, playing by the rules. No. Varun's silence is telling me that. I'm guilty of it. I have tried to get my. But have you used like your star power out of it, or just like the usual bribe situation? No, so actually it was a situation wherein the very kind Gentleman. person realized it was not an intentional, because आजकल तो cameras होते तो चालान तो कट ही जाता है. That was not the point. But I didn't realize when I sort of crossed it, he was there and he saw me. But I think parents के goodwill के वजह से मुझे sorry मैंने बोला उन्होंने जाने दिया. मेरा credit नहीं है, parents का credit है. सुप्रिया सर और सचिन सर की बेटी हूँ. You must love them. मैंने बोला ही नहीं, उन्होंने देखा और उन्होंने मैम आप जाइए. हाँ, उन्होंने एक बार माफ कर दिया. Varun, what about you? Please tell me your story of how you got out of a ticket or a fine. I would rather not. But I wasn't very successful at it, so Okay. let's not tell that story. There's no It's tough excuses here. now. The memorable one with me was actually when I don't think I'd got my driver's license yet, and I took my dad's car out when he was not there, and I knocked it. Lovely. Yeah. मुझे Good to मास्क hear. के लिए भी मिला था, मास्क. अच्छा, mask in the car. या मास्क. कश्मीर में. I was like, I just wanted some fresh air और मुझे फाइन कर दिया. But that's such a sad place I to have your swear. mask Exactly. on. Guilty of cheating on a partner? I have never. I play by the rules. That's the answer. Shefali. Who's going to tell the truth here? You can. You don't have to get into the details of it. Be honest. Be candid. Come on. No, I'm a loyal client. Yeah, it's true. You can ask my ex-girlfriends. I'll be sure to do that. Yeah, they'll tell you. Shriya? I think I would not be able to be with someone if I mean, I would want to be with someone enough. Only then would I be with that person. So even I haven't found myself in a situation like that. Fair enough. Guilty of going hungover to a business meeting or audition? I love it. Please. Meeting. Give juice. Important meeting, but I also had a friend's party and I'm a lightweight, so even
maybe like 3 glasses of wine and not eating enough can get me a hangover. So yeah. But did you tank the meeting or was it No, successful? I went for it, but I was not like bad hangover. It was fine, but it was still a hangover. Could have been better. Yeah. Okay, what about you, Varun? I went. If you say no, I will call you out. There was a audition that I had to do, and it required the character to be high, and I was struggling with it a little bit. So I thought, let's make life easy, and Method karte hain. I tanked some vodka, I think, a lot of it by the end of it. In the parking lot, I was sitting and swigging it before Right before the audition. Right before the audition. And I went and messed it up royally. Oh God. Royally. I was That like, backfired? after this, I am never going to actually get high to do a part like that. So you got drunk on vodka before an audition and you tanked it. I wonder why. So surprising. Thank you. Never Shefali? again. कुछ ऐसी I'm turning out to be this very boring person who plans. She came totally hammered to set the yeah. कुछ narration के पहले you're like, guys, your character. No, I will plan my drinking sessions when I can afford to have a hangover. Okay, guilty of cheating on a test or examination of any sort. हाँ मतलब स्कूल में थोड़ा बहुत हुआ है बट आई वाजंट इन द सेंस लोग मेरे पेपर से कॉपी करते थे Oh my god, you were one of those. कि दे बट मैं हेल्प भी करती थी बट मैंने भी चीटिंग किया है आई हैव चीटेड स्कूल टेस्ट में बट नॉट इन लाइक यू नो देयर वुड बी पीपल इन माय क्लास हु वुड बी वेरी लाइक hectic professional cheaters. I don't know how they had these tricks up their sleeves. What's a professional cheater? Like hiding By things that I mean and- they would come prepared. And I was one of those nerds who enjoyed studying, to be honest. course you So were. I would be very prepared for my exams. But maths में एक दो बार I've cheated maths में. और वो भी ठीक से cheat नहीं किया था. उस cheating में भी गलती की थी मैंने. Sweet girl is like, Yeah. I used to let people cheat also. Yeah. I'm so nice. Varun, what about you? I used to be petrified of being caught. वही. So I you didn't cheat? I think maybe on a biology exam I must have tried to but I don't think I had the courage to. I was too scared of my father in that department. He's a very straight guy. Straight edge. Straight. We don't do totally straight arrow. Shefali, should I bother asking? No. Don't bother. Before the question, Shefali's like, no, don't ask. Not applicable. But you know what I meant is there are some people who, like he said, वो डरते ही नहीं हैं. किसी These को खौफ kids, नहीं है, बिल्कुल भगवान का भी नहीं. डर मतलब नहीं I remember this guy. He used to sit in front of me. He would fully turn behind, and I would be scared on his behalf. I would be like, you look ahead. The teacher's looking. Don't look at my face. Save yourself. Save yourself. Okay, guilty of being a part of a project that you weren't fully convinced about or invested in. This you can be. Yes. So give details. Yeah, I mean, I think it was a corporate film, a scientific kind of a corporate film. And I felt like I was jobless for a while and I wanted to do my best. It was deadly dull and I just couldn't focus. The writer or my assistant that I had hired couldn't keep her eyes open. So finally, I think they also realized and they threw us out. So it was a bad experience. That's a fun story. What about you guys? Not film or series workspace में because I feel like thankfully I have not had to do something out of any other sort of reason other than the fact that I really like the part, but an ad maybe, an ad or two which seemed very very cliche and very very typical and you had to be like no, exactly, but got paid well for it, so just shut up and got the job done. Varun? Not really. Like even where the ad has been like that, we've got paid well for it. So you just suck it so up. you suck it up, yeah. And deal with it. You suck it up. Okay, and lastly, guilty of having a crush on someone you're working with. Like while you're working with them. Before, Or after, before, during, after. whatever. Sky's the limit. I'm living the part. I had a crush on her. That is so sweet. You heard it here first, guys. Oh, how sweet. अभी headline Should I यही get down my रखेंगे वो, you know ना. अभी Varun यही admits to tickle. having a crush on Shriya. I have in the past. Yeah. Have we ever acted upon it? No.
was a silent crush. Juicy questions, huh? Arre, she already said that I'm here for the juicy questions. What about you, Shefali? I was hoping you wouldn't ask me this. But when She had a crush on our co-director, yeah. Yeah. Well, that went a bit far. No, I think, you know, it's called cabin fever. You're working together in such intense and difficult situations. I think you end up having a crush on a lot of people. Yeah. Well, thank you so much for joining me, guys. It was an absolute pleasure and good luck for everything ahead. Thank you. Thank you. Thank you.